Praise the Lord, Yamasiki. Very good evening to the entire fraternity, the most beautiful, blissful family of Hosanna the Jesus Christ Online Church. Azizon वक्त है कि हम कलाम की तरफ जाएंगे. Thank you so much, all of you, all my dear brothers and sisters, for the warm welcome. And now this is a time to prepare ourselves, our souls, our body, our mind, and our thoughts for the Word of God. Hallelujah. Let's do a small prayer for the preparation. मसीह में आप सबकी सलामती हो, खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद का हाथ आप सब पर बढ़ा रहे. होशाना द जीसस क्राइस्ट फैमिली, मेरी अपनी फैमिली और हम सब आज इबादत शुरू करने से पहले हम खुदावंद के पाक रूह को वेलकम करेंगे. हम खुदावंद के पाक रूह का शुक्र करेंगे क्योंकि पाक रूह की हदायत, पाक रूह की गाइडेंस के बगैर ये कतन मुमकिन नहीं था कि हम आज इस मज़बा पर खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम, खुदावंद के अजीम नाम आज पेश कर सकते हैं. क्योंकि पाक रूह हमारा जो मददगार है वो हमारे लिए आहें भर भर के शफायत करता है और खुदावंद के इलाही मंसूबों को जो हमारे लिए खुदावंद ने रखे हैं उनको हमारी जिंदगी में पूरा करता है. मैं खुदावंद के पाक रूह का शुक्र अदा करता हूँ और खुदावंद के फजल का शुक्र अदा करता हूँ. आमीन. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Jesus, Jesus, Jesus. We thank you, Lord. We praise you, Father, for this beautiful evening, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Yes, Father, we came unto your holy presence, Father God. Yes, Jesus, I bring all the group members unto your presence, Father God. Yes, Jesus, touch us, and fill us with your Holy Spirit right now. Yes, we ask for the abundance of your presence here. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Touch everyone. Cover us, Lord, in your holy blood, Father God. Let your fire release from the word right now. Yes, Jesus. Hallelujah. Prepare us for the word, Lord. Yes, hallelujah. In the name of Jesus, I ask. Amen. मसीह में मेरे चीज़ों, आज का कलाम शुरू करने से पहले मैं गुज़िश्ता सरमन के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ और ये लिंक भी यहाँ पर आपको सेंड किया है ताकि गुज़िश्ता जो लेक्चर है, क्योंकि ये चेन है, इस सरमन की चेन है, तो जो पहला सरमन हुआ, जो पहला एपिसोड हुआ, उसका लिंक मैंने आपके साथ आज दोबारा शेयर किया ताकि जो आज इस मैसेज को सुनते हैं वो अपनी कंटिन्यूटी को बरकरार रखने के लिए, अगर किसी वजह से वो मिस हो गया उनका लेक्चर, तो वो इस लिंक के जरिए से हमारा पिछला लेक्चर देख सकते हैं. और मैं यहाँ पर खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि जो बोझ खुदावंद ने हमें दिया और उस बोझ को लेकर जब हमने इस लेक्चर को, इस पैगाम को, इस सरमन को आप सब तक पहुंचाया, तो हम सब के पास डबल पोर्शन ऑफ ब्लेसिंग हम सब ने रिसीव किया. और मैं खुदावंद का इस बात के लिए शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने बहुत सी गवाहियां खुदावंद के जलाल के लिए हम तक पहुंची और ये हर एक काम खुदावंद के जलाल के लिए है. प्रेज गॉड. हालेलुया. Praise the Lord. Very good evening to the entire unit of HTGC. So therefore, students, I am translating the entire sermon on behalf of Pastor Jamil Mohan Marcus this evening, and I am addressing you. Hallelujah. So if you missed the last sermon, you can go to the YouTube link and you can fetch the link and the entire names of God. Hallelujah. Praise the Lord. Let's begin with the second part of our sermon, the attributes, the speciality, and the characteristics of God. Hallelujah. Praise मसीह में मेरे अजीजों, आज हम कलाम शुरू करते हैं.
لاسٹ سرمن میں ہم نے خداوند کے ناموں کے بارے میں جانا. آج کا جو پیغام ہے اس میں ہم خداوند کے تعریف والے نام، صفت والے نام، جو خداوند کے جو کوالٹی ہے، گاڈ کے جو کوالٹی والے نام ہیں، ان کے بارے میں ہم سیکھیں گے. اور جب ہم ان ناموں کے ساتھ خدا سے بات کریں گے تو آپ کی زندگی میں ایک بار پھر دہراؤں گا کہ بڑھوتی آئے گی، خدا ان کے ساتھ تعلق بنے گا. ہاللیلویہ. آج کے اس پیغام میں جب یہ ہم پڑھتے ہیں تو پیدائش 16 باب اور اس کی 13 آیت میں ہم دیکھتے ہیں نام جو ہم پڑھیں گے، اور اس نام کے ساتھ جو آیت ہے اس کو ہم دیکھیں گے. اور ہاجرہ نے خداوند کا جس نے اس سے باتیں کی ات ایل روٹ نام رکھا، یعنی آئے خدا تو بصیر ہے، کیونکہ اس نے کہا کیا میں یہاں بھی اپنا دیکھنے والوں کو جاتے ہوئے دیکھا. ہاللیلویہ. So, dear brothers and sisters, in today's sermon, we are going to know the names that shows the praises of Lord. Hallelujah. And when you call upon Lord's name, you will going to see the tremendous change, the tremendous grace and blessings in your lives. Hallelujah. Praise God. میرے عزیزو، خداوند کے نام جس کو ہم رب العالمین کے نام سے بھی جانتے ہیں، ایت ایل روئی کا مطلب ہے اے خدا تو بصیر ہے، یعنی کہ تو رویا کا خدا ہے. خدا جو رویا میں نظر آتا ہے، خدا جو دکھنے والا خدا ہے، خدا جو دیکھ سکتا ہے، وہ خدا. جب ہم ایت ایل روئی کہیں گے، رب العالمین کہتے ہیں، تو رب العالمین کا مطلب ہے کہ وہ دیکھنے والا خدا ہے. اگر ہمیں کہیں پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خدا ہمیں نہیں دیکھتا یا خدا ہمیں محسوس نہیں ہوتا، میں نے اکثر لوگوں سے یہ کہتے سنا ہے کہ خدا ہمیں چلتا پھرتا نظر آئے، تو ممکن ہے ان کو خدا چلتا پھرتا نہ نظر آئے، مگر میرا ایمان یہ کہتا ہے، خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب ہم خدا کا نام، خدا کے صفت کے ساتھ، خدا کی کوالٹی کے ساتھ اس کو پکاریں گے، رب العالمین کہیں گے، ایت ایل روئی کہیں گے، تو وہ ضرور ہمیں چلتا پھرتا اپنے ارد گرد نظر آئے گا، کیونکہ خدا کی جو صفت ہے ہم نے اس کے صفت کے ساتھ خدا کو پکارا ہے. پریز گاڈ. ہاللیلویہ. So, in the 9th name, you are going to learn that the another name that we call our Almighty God is Rabbul Alamin, the Lord who gives us vision. Hallelujah, praise Lord. میرے عزیزو، ہم یہاں پر اگلا نام دیکھتے ہیں خداوند کا. ہم اکثر اور بہت دفعہ ہم کہتے ہیں کہ رب یہ کام کرے گا، رب یہ کام کرے گا، یا ہم رب کو کہیں گے. آج جب ہم اس کا مطلب دیکھتے ہیں تو دانیل نبی کی کتاب میں جب ہم اس نام کو دیکھتے ہیں تو ہمیں وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ یہ جو رب ہے یہ امیر ہے، فیصلے کرنے والا. خدا کی جو صفت ہے، اس نام کی جو کوالٹی ہے، وہ ہے فیصلہ کرنے والا، ڈیسیژن دینے والا. اور جس کو ہم عام زبان میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کسی کو امیر بناتے ہیں کہ یہ اس جگہ کا امیر ہے، فیصلے کرنے والا ہے. تو ہمارا جو خدا ہے وہ ہمارے فیصلے کرتا ہے.
तो आप जब दुआ करें तो ये कह के दुआ करें कि आए रब तू इस बात का फैसला कर, क्योंकि ये तेरी सिफ्त है, ये नाम तेरी सिफ्त है कि तू हमारे फैसले दुरुस्त कर सकता है। अगर आज तक आपकी जिंदगी के फैसले नहीं हो रहे तो मुमकिन है आप खुदा को ये कह के बात कर रहे हो कि आए खुदा तू ये काम कर। खुदा वो काम करेगा, जरूर करेगा, खुदा करता है। मगर खुदा ने जब हमें ये बोझ दिया, हमें ये सिखाया कि हम खुदा के सिफाती नाम को पुकार कर अपनी जरूरियात उसके सामने रखें, अपनी गुफ्तगू, अपनी बातचीत उसके सामने रखें, तो हमें ये जरूर है कि हमने कोई फैसला करना है तो जरूर हम उसको कहें कि आए रब तू ही मेरे इस बात का फैसला कर। किसी का वो काम रुका है, प्रैक्टिस करें, खुदा से कहें कि हाँ खुदावंद हमने सीखा, हमने सुना, तो अब तू हमारी इस बात का फैसला कर, क्योंकि तू रब है, तू ही फैसला करने वाला खुदा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। So, dear friends, when we come to this name, this means that the Lord is just. The Lord is the Lord of justice, who gives the decision, who rules the over world, the universe, the entire earth. Hallelujah. And when you go to the chapter 2 of Daniel, you will come to know there is the picturization, that moment was like that. The king called the magicians to solve the vision he saw in his dream. Now that's why he called all the magicians, all the persons who is very well educated, but no one could answer, because we know that only the Lord has the power to justify, to say what is going to be happen in the future. And so the Daniel came and answered all the questions there. And we see in our lives tonight that if we are going to pray for anything that we want the exact answer, how to do this, how to do that, so just ask the Lord that you are the Lord of just, Father God. So give me the right knowledge, the wisdom to do the right thing, because you are the Lord who makes decision for my life also. Hallelujah. Praise the Lord. मसीह में मेरे अजीजों, अब हम जिस नाम को सीखने को हैं, ये नाम आपने अक्सर और बेशतर जरूर सुना होगा, ओदनाए। और जब हमारे जो इस्राएली भाई हैं, वो जब अपनी इबादत करने के लिए लोगों को बुलाते हैं, तो वो ये जरूर, उसमें आपने जरूर किसी न किसी चैनल पर, किसी न किसी जगह पर सुना होगा, तो वो ये लफ्ज बोलते हैं ओदनाए। और ओदनाए का मतलब है आए खुदावंद हमारे रब। अब हमने लास्ट सर्मन में सीखा था खुदावंद का मतलब कि हमारे साथ रहने वाला, और अभी हमने पिछले वॉइस क्लिप में हमने सीखा, पिछले नाम में रब का मतलब कि फैसला करने वाला खुदा। तो ओदनाई का मतलब है खुदा जो हमारे साथ रहता है, हमारा फैसला, हमारी चीजों को हैंडल करने वाला खुदा। और गहराई में एक और नाम खुदा की सिफ्त के साथ, ओदनाए, जब आपने खुदा को पुकारा तो आपने कहा कि आए खुदा तू जो मेरे साथ रहता है, तू जो मेरे फैसले करता है। हालेलुया। तो खुदा के साथ किस तौर से आपकी कुर्बत बढ़ना शुरू हो जाएगी। Lord, one more time I want to say Jamaseki to you. Hallelujah. So in this name we are going to know the power of Lord. As we all know that our Almighty God is the powerful Lord, the Lord of might. Hallelujah. In this name we call our Lord Yehovah Adonai.
Hallelujah. And in so many references, we can see it in Genesis 15 and 1 also, and in Psalms, as we mentioned here. Here we see that it is written, the Lord of majesty. Exactly, the meaning is Jehovah Adonai denotes that my master who rules the world, the universe, everything we had. Hallelujah. So Jehovah Adonai means my majesty, my master. Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया, खुदावंद के नाम की तारीफ करते हैं। खुदावंद का शुक्र है कि जो हमें अपनी कुर्बत में रखने के लिए हमें बहुत से ऐसे मौके देता है कि हम खुदावंद के करीब रहें, क्योंकि वो हमें अपने परों के छांव में रखता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। हम अब जिस नाम को सीखने वाले हैं, मैंने जब इस नाम के साथ दुआ की तो ये मेरी गवाही है, मुझे उसी वक्त मुझे गवाही मिली और शिफा हुई जब मैंने इस नाम को जाना। मेरे अजीजों, हम जब भी खुदावंद की बात करें तो जरूर है कि पहले खुद खुदावंद को प्रैक्टिस कर लें, खुद खुदावंद के साथ उस कुर्बत में आ जाएं, ताकि हम पूरे तौर से खुदा के साथ गुजारा हुआ वक्त, खुदा से लिया हुआ तजर्बा, खुदा से लिए हुए तजर्बे की बरकत जब हम शेयर करें तो वो पूरे तौर से आप तक पहुंचे। यहोवा राफे, सेहत देने वाला खुदा ने अपना ये नाम बनी इसराइल पर मारा के मकाम पर जाहिर किया कि खुदा जो सेहत देने वाला खुदा है। हम खुदा से दुआ करते हैं, शायद हमें उन दुआओं का रिप्लाई थोड़ा लेट मिलता है। मेरे चीजों याद रखिए, जब खुदावंद का सिर्फ है, हम खुदा को हर बार खुदा खुदा कह के ही पुकारते रहते हैं, मगर जब हम खुदा को उसकी क्वालिटी के नेम के साथ पुकारेंगे तो वो उसी वक्त आप पर फोकस कर लेगा, वो उसी वक्त आपको वो ब्लेसिंग देगा, वो उसी वक्त वो आपका वो काम करेगा जिस के लिए आपने उसको पुकारा है। यहोवा रोफे, आप जब इस नाम को पुकार कर दुआ करेंगे शिफा के लिए, हमारा हर रोज हीलिंग एंड डिलीवरेंस का सेशन होता है होशाना बाय जीसस क्राइस्ट प्लेटफॉर्म पे। मैं सिस्टर एडलिना का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने सबको गैदर किया, तमाम टीम का शुक्रगुजार हूं कि हम सब मिलकर शिफायत करते हैं दोपहर के सेशन में। उस सेशन में जब शिफा की बात हो तो सब यहोवा राफे कहकर पुकारे, वो शिफाएं उसी वक्त ज़हूर पजीर होना शुरू हो जाएंगी जो शायद थोड़ा सा डिले में आती है। ईमान की पुख्तगी आना शुरू हो जाएगी, खुदावंद काम करना शुरू कर देगा। हम सब खुदा को इस नाम से पुकारे तो जो शिफा हमें चाहिए खुदावंद ऐन वक्त पर हमें मुहैया कर देगा। खुदा हमारी वैसे भी सुनता है। मैं ये नहीं कहता कि जिनको इस नाम से दुआ नहीं करेंगे उनको शिफा नहीं मिलेगी, उनको भी शिफा मिलेगी, मगर जब हम खुदा को सिफाती नाम के साथ पुकारेंगे तो खुदावंद जल्द हम पर अपना चेहरा मतवज्जा करेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। Praise the Lord. So, dear friends, dear family of Hosanna, in this name we are going to know the speciality, the special quality of our Lord. Hallelujah. In this time of pandemic, we need mostly the healing. Are you getting my point? Hallelujah. So, this name, what we call is Jehovah Rophi. And some of the times we said Jehovah Rapha, the Lord who heals. And in the mentioned words above, when you are going to see that there comes a condition also. When you want the Lord to heal you, you have to turn from your bad deeds also. Because it has been written in the word and it is said by the Lord himself that turn from your bad deeds. So it involves confession, repentance, and then it comes to the healing.
that what we call the restoration. Hallelujah. So it is very important that whenever we pray, as in the sessions, as in personal prayers, whenever we ask for the healing, do not forget to mention the name of the Lord, that Jehovah Rapha, Jehovah Rofi. You can say anything of that, because both are the Hebrew words, and you can claim it in the name of Jesus. And the reference is Exodus 15, the verse 26. Hallelujah. Praise the Lord. Thing I want to tell you, dear friends, that this name has been given to the Lord at the place of Mara. When you're going to read everything about the Israelis, the 400 years of slavery, and after that you see many more things when Moses was leading the entire team of Israel. And when they came out of the Egypt, and they rested somewhere in the wilderness, the forest of Mara, and there they are not getting the water to drink. And when they drink, there came so many weird disease from the water. And when they pray to the Lord heals the entire water. Hallelujah, praise the Lord. This is the incident. You can read it in the mentioned reference. Hallelujah, praise. मसीह में जो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि पाक रूह की गाइडेंस में, खुदावंद के फजल वाले हाथ में हमें खुदा अपनी सिफात हम पर जाहिर कर रहा है, हम सब पर। मैं और पास्टर लीना जब आप तक इन नामों को पहुंचा रहे हैं खुदावंद की हदायत के साथ, पाक रूह की मदद के साथ, तो आप भी हमारे साथ एक रूह में इन चीजों को रिसीव कर रहे हैं, और इस सारे प्रोसेस से खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिल रहा है। हालेलुया। खुदा का ये नाम खरूज की किताब उसके 20 बाब में जब आता है तो खुदाए गयूर, खुदा जो गैरत वाला है, गयूर खुदा है। ये नाम खुदा ने 10 अहकाम देते हुए जाहिर किया, और कलाम मुकद्दस में लिखा है तो उनके आगे सिजदा ना करना, उनकी इबादत ना करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा गयूर, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ, और जो मुझसे दावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ। आमीन। मेरे अजीजों, हम आज जिम्मेदारी के साथ इस नाम को अपनी तरबियत के लिए, अपनी रूहानी सेहत के लिए लें, और इस नाम को सीखें और इस नाम को सिखाएं उन लोगों तक जो गैर माबूदों के पास जाना पसंद करते हैं। हम उनको बताएं कि खुदा गयूर खुदा है, गैरत वाला खुदा है, और उसने अपने कलाम में लिखा है कि अगर तुम किसी गैर माबूद को सजदा करोगे, उसकी इबादत करोगे, तो मैं उसकी सजा तुम्हारी तीसरी और चौथी पुश्त तक लूंगा। तो मेरे अजीजों, हम आज अगर हम में से कोई भी एक शख्स अगर गैर माबूदों के पास जा रहा है, तो वो अपनी जात को तो मुश्किल में डाल रहा है, मगर अपनी जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है, जो 3rd और 4th जनरेशन है, उसके लिए वो ऐसी आग दहकती हुई खड़ी कर जाएगा जिसकी लपेट में वो आ जाएंगे उसके नस्ल के लोग, और उनको पता नहीं होगा कि हम कहां पर फंसे हैं। तो आज जो लोग इस बात को अहमियत देते हैं कि वो गैर माबूदों के पास जाएं, तो उन तक इस नाम के वसीले से मुनादी करें
کہ میری بہن میرے بھائی دیکھ خدا غیور خدا ہے، وہ تجھے تو سزا دے گا تیرے استعمال کی، مگر تیرے ساتھ ساتھ تیری تھرڈ اور فورتھ جنریشن کو بھی وہ اس آگ کی لپیٹ میں لائے گا، اپنے غضب کی آگ کی لپیٹ میں لائے گا، وہ سزا دے گا۔ تو تم کیوں آج یہ کام کرتے ہو تاکہ تمہارے آنے والی نسل، آنے والی جنریشن پہلے سے ہی عذاب میں مبتلا ہو کر اس دنیا میں کرب میں وقت گزارے؟ اور جو لوگ ایسا کر چکے ہیں، جو ہمارے بزرگ اس کام کو کر گزرے ہیں، غیر معبودوں کو مان چکے ہیں، تو آج ہمیں نجات کی طرف آنے کا وقت ہے۔ ہم آنے والے دنوں میں خداوند کے فضل سے نجات کے ٹاپک پر بھی بات کریں گے، تاکہ بہت سے لوگوں کو ان کے باپ دادا کے گناہوں سے خلاصی ملے۔ تو ضرور اس نام کو لے کر اپنی زندگی میں رکھیں کہ خدا غیور خدا ہے، اور وہ اپنی غیرت میں اپنے قول کو پورا کرنے کے لیے ہمارے ایک نکمے کام کی سزا ہمیں تو دے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ کتنی اور پشتوں تک وہ گناہ کی سزا جائے گی۔ سو آج آپ اور میں اس بات کو یہیں پر سٹاپ کریں، تاکہ ہم اور ہماری آنے والی نسلیں خدا کے رحم میں زندگی گزاریں۔ ہاللیلویہ۔ میں مسیح میں بہت امید کرتا ہوں کہ آپ سب اس کلام کو سن رہے ہوں گے۔ آخری 4 نام ہیں، مسیح میں بنے رہیں، روح میں اپنے آپ کو ابھاریں، تاکہ ہم وقت کو نہیں بلکہ آج خداوند اس کلام کو سیکھنے والے بنے۔ ہاللیلویہ۔ Lord, praise the Lord, dear friends. I'm very happy that you people are listening to us very carefully, and the Holy Spirit is in the midst of us. As we are, giving you the feed from the Bible, the word, the Rhema word of God, you people are going to be blessed entirely. Hallelujah. And in this name, we are going to learn that the Lord only wants us to praise Him only. Hallelujah. And in Hebrew we'll say, oh dear friends, as we are continuing this name, Yehovah Kana. Are you getting it now? So it is very important that we know the attribute of God, that Lord doesn't want any of His creation to go to the other gods. Hallelujah. So whether you want to know about your future, whether you want to know about so many things that the magicians and the, so many peoples are there who did all the things that is fictitious, that is wrong in the eyes of God. So Lord, today warning us, do not go to those peoples, because it is strictly banned from the Lord, is strictly banned in the Bible. So if someone is going there to the other gods, to the other things that is like, the zodiac signs we want to see, and the, future we want to see, we go to the tarot card readers. So please do not go there. It is the warning in this name also, because the Lord is the Lord of might, we all know. And He is the Lord of reputation. So He didn't like anyone to praise the other gods. Hallelujah. So He called us by the name. We have to maintain the dignity of this name, Yehovah Kana. So here we want to encourage you to sustain yourselves, to learn more of the 4 names of God. So do not see the time, because this is the very time to know the praises, the characteristics, the speciality of our Lord the Almighty. So be with us, do not go anywhere. Praise the Lord. مسیح میرے عزیزوں، خداوند کا یہ نام مجھے بے حد پسند ہے، سب نام مجھے بے حد پسند ہیں، مگر میں نے جب آج سے اراؤنڈ 8 سال پہلے، 8 یا 9 سال پہلے لگ بھگ، میں نے جب اس نام کو سیکھا، پڑھا کلام مقدس میں سے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میری زندگی میں، میری روح میں ہمیشہ نئی جان ڈال دیتا ہے جب میں اس نام کو پڑھتا ہوں۔ حی القیوم،
حی القیوم یہ وہ نام ہے جو کہ ابدیت کی طرف اشارہ کرتا ہے، خداوند کے ہمیشہ رہنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور میں جب غیر زبان بولتا تو اکثر یہ نام میرے اس دعا میں، اس غیر زبان میں جب میں بولتا ہوں تو یہ نام اس وقت میں ضرور خداوند کا پاک روح میرے اندر سے اس نام کو بلواتا ہے، کیونکہ ہم سب ایماندار لوگ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم غیر زبان جب بولتے ہیں تو آواز ضرور ہماری ہوتی ہے مگر لفظ خدا کے روح کے ہوتے ہیں۔ آواز ہماری ہوتی ہے، لفظ خدا کے پاک روح کے ہوتے ہیں۔ ہم ضرور آنے والے دنوں میں خدا کے پاک روح کی ہدایت سے، خدا کی مرضی سے ہم غیر زبان پر بھی سیکھیں گے۔ تو میں جب غیر زبان بولتا ہوں تو یہ خداوند کا صفاتی نام، کوالٹی والا نام خداوند کا ضرور میں اپنے منہ سے نکلتا ہوا اس کو میں قدرت کے ساتھ آگے جاتا ہوا دیکھتا ہوں، اور جب یہ میرے منہ سے نام نکلتا ہے حی القیوم تو مجھے روح میں ایسی تازگی ملتی ہے جیسے میں کانکریٹ کا بن گیا ہوں، میری روح اتنی مضبوط ہو گئی ہے کیونکہ ابدیت کی طرف اشارہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ جیسا کہ ہم نے میرے عزیزو خداوند سے، خداوند کے پاک روح سے ہم نے سیکھا تھا لاسٹ سرمن میں، حی کا مطلب زندگی اور القیوم کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والا۔ حی کا مطلب زندگی اور القیوم کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والا۔ تو یہ خداوند کا صفاتی نام ضرور جب آپ کو مضبوطی، خداوند کی پریز قائم رہنے کے لیے، خداوند میں قائم رہنے کے لیے، کسی چیز پر قائم رہنے کے لیے آپ کو دعا کرنی ہے تو کہیں حی القیوم، تو ہی سب کچھ کرنے میں قادر ہے، کیونکہ تو ابدیت کا باپ ہے، سلامتی کا شہزادہ ہمارا یسوع ہے۔ تو ضرور اس نام کی افادیت کو، اس کی کوالٹی کو سمجھ کر خداوند کو پکارے حی القیوم۔ پریز گاڈ۔ So here we learn that the Lord is the Lord of eternity. The Lord is infinite God. As we already teach you that the Almighty God is the infinite God. We could not vanish His name, His presence, never. Hallelujah. So in this name you are learning that the Lord stays forever and ever. And as on behalf of Pastor Jamil, I'm telling you that he is sharing his testimony also, that he'll come to learn, to know about this name 7 or 8 years ago. And when he knows this name, when he learned this name, there is a tremendous change in the way he prays, in the relationship with the Holy Spirit. And whenever he used to pray in the tongues, this name comes out from his mouth as usual. Hallelujah. So he wants to encourage you, dear friends, that do not forget to mention the names of the Lord, because in each and every name there is the different power. As in this name we see that Lord is the Lord of eternity, today, yesterday, and forever. Hallelujah. Praise the Lord. Pronounce this name Hail Qayyum. Hallelujah. Praise the Lord. مسیح میں میرے عزیزو، ہم 23 زبور کو سب پڑھتے ہیں، سام 23 اس کا فرسٹ ورس ہمارے گھروں میں رہتی ہے، ہم اکثر اس کو پکارتے ہیں خداوند میرا چوپان ہے۔ تو ہم عبرانی میں اس کو کہیں گے یہوہ روئی، یہوہ روئی۔ اگر آپ اپنی دعاؤں میں یا خالی یہوہ روئی لکھ دیں، یہوہ روئی کہہ دیں، اس کا مطلب ہے
खुदावंद मेरा चौपान है। और ये खुदावंद की ग्रेट क्वालिटी है कि वो हमारा चरवाहा है, वो हमारा चौपान है। अगर खुदा हमें ना ड्राइव करे, खुदा हमें ना चलाए, तो हम ऐसी जगह भटकेंगे जहां से हमें शायद वापसी का रास्ता भी ना मिले। सो खुदावंद के सफाती नाम के लिए मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ और खुदावंद को कहता हूँ कि आए यहोवा रोई, तू हमारा हमेशा चौपान है, रहेगा और तू रहता आया है। तेरा शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया, आमीन। Praise the Lord, dear friends. I think you people are getting bored, but please do not get bored because we are on the sensitive note this time, and Holy Spirit is directly talking to you. Hallelujah. So, in this name, you are going to know the beautiful quality of the Lord, and we'll see this quality mostly and more in Jesus Christ. Hallelujah. When we came to the New Testament. And we know that Jesus is our shepherd. And as Pastor Jamil is saying, that we all learned the Psalm 23 from our childhood, always. And we used to teach that Psalm to our children also, that the Lord is my shepherd and I shall be no want. Hallelujah. So this is the very beautiful quality of the Lord Almighty, because the shepherd always worried and worries about his flocks, about his sheep, each and every sheep. He concerned about it. Hallelujah. So it is very important for us that we praise him, because as we know, the Lord and the man both needs to be praised. And we felt happy when somebody says that you look beautiful. How, blush came to our cheeks. Hallelujah. So likewise, when we praise our Lord and when we say, the Lord, you are my shepherd, then God also blushes. Hallelujah. So do not forget to mention this name, Jehovah Roi. It means the Lord is our shepherd. हालेलुया, प्रेज गॉड। मसीह में मेरे अजीजों, बस हम लास्ट में दो नाम हम सीखने को हैं खुदावंद के पाक के फजल से। मैं जानता हूं कि कुछ ज्यादा हो गया, मगर हम खुदावंद के हजूर हैं और खुदावंद के नाम को मुबारक कहेंगे। खुदा तुम्हारा पाक करने वाला खुदा, यहोवा मग शकीम, यहोवा मग शकीम, ये वो सिफाती नाम है, ये वो क्वालिटी वाला नाम है खुदा का, कि अगर हम जब अपने आप को पाक करने की बात करते हैं कि अरे खुदा तू हमें पाक कर, तो हमें खुदावंद की सिफत याद आएगी कि हाँ, खुदावंद जो यहोवा वक्त सकीम है वो ही हमें पाक करता है। हम अपने घरों में इन नामों को लिख के लगाएं। हम इन नामों को लोगों तक पहुंचाएं कि हाँ, यहोवा मग शकीन जो है वो ही खुदा है, वो खुदा की सिफत है। ये खुदा की सिफत है कि वो हमें पाक करता है। ये हमारी जरूरत है, मगर खुदा की ये सिफत है, खुदा की ये क्वालिटी है कि वो हमें पाक करता है। हालेलुया। Praise the Lord, everyone. Be attentive. Do not get bored. As I always say, do not get bored, because it is very important for all of you to know about the names of the Lord. Hallelujah. And it is just according to the will of the Holy Spirit. So do not go anywhere. And now in this name, you are going to know the special quality of the Lord who sanctifies us, who make us pure. And we called it Yehovah Makadesh also. Hallelujah. And in this we see that the Lord always entertained the purity, the holiness. Without holiness, we could not make our Lord happy. Sanctification is most important thing in each and every believer's life.
the sanctification of the soul, the sanctification of the mind, the sanctification of the body, and the sanctification of the thoughts as well. Hallelujah, are you getting my point? So it is very important to know the attributes of our Almighty God. And in this name, you have learned that our Lord is the Lord of purity, the sanctification, Yehovah Makadesh. Another pronunciation is also like that, Yehovah Malk Shadi. Hallelujah. And Makadesh is also the right pronunciation. Praise Him. हालेलुया, प्रेज गॉड। मसीह में एक बार फिर आप सबकी सलामती हो। और हम बिल्कुल अब आखिरी नाम जो खुदावंद का, मैं आखिरी तो नहीं कहूँगा, जो आज के सरमन का जो लास्ट नाम हम सीखने जा रहे हैं वो है अब्दी खुदा। पैदाइश की किताब उसका 21 बाब उसकी 33 आयत में, मैं किसी वजह से इसको यहाँ पर वो पेस्ट नहीं कर सका, मुझसे वो अभी हो नहीं रही थी, कुछ शायद टेक्निकल प्रॉब्लम है। दैट्स व्हाई जस्ट आई पुट द रेफरेंस हियर कि आप इसको जरूर कलाम मुकद्दस में से देख सकें। अब्दी खुदा, खुदाए कयूम, कायम रहने वाला खुदा, हमेशा रहने वाला खुदा। तो खुदा की जो क्वालिटी है, जो खुदा के नाम की जो क्वालिटी है, जो सिफ्त है, वो ये है कि आए अब्दी खुदा, खुदा कयूम, अजली खुदा, तू ही मेरे लिए सब कुछ कर, तू होशाना द जीसस क्राइस्ट फैमिली के लिए अपना रहम कर, सेहत दे, तू हमारी जिंदगी पर अपने ऐसे राज, ऐसे मकाशफात खोल, अब्दी खुदा, जो हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है, जो तेरा मकसद है। खुदा को पुकारे, अब्दी खुदा, खुदा कयूम, तू कायम रहने वाला खुदा है, तू अजली खुदा है, तू हमारी जिंदगी के सारे बोझ ले ले ताकि हम तुझ में राहत पाए, और तू अपनी जिंदगी का मकसद, हमारी जिंदगी का मकसद हम पर जाहिर कर, अपने मुकाशफात हम पर खोल ताकि तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, 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 प्रेज गॉड। मेरे तमाम तर फैमिली मेंबर्स, आज जितने भी लोग अभी इस कलाम को सुन रहे हैं, बाद में YouTube पर इसको सुनेंगे, देखेंगे, मैं सबके लिए खुदावंद से बरकत चाहता हूँ। खुदावंद की खात्मा पास्टर एडलीना हमारे साथ हैं। खुदावंद के कलाम को रूह की मामूरी के साथ ट्रांसलेट कर रही हैं। हम सब इन नामों से बरकत हासिल कर रहे हैं। मैं इस वक्त रूह की मामूरी में सैर हो चुका हूं, और मेरा दिल है कि मैं और बोलूं, मगर हमें वक्त का और हर एक चीज का ख्याल रखना है, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि हमें जोश से और होश से खुदावंद के कलाम की खिदमत करनी है। सो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, आप सबके लिए बरकत चाहता हूँ। आप सब जो इस कलाम को सुन रहे हैं, अपनी जिंदगी में इस कलाम के वसीला से बरकत हासिल कर रहे हैं, मैं खुदावंद के नाम की तारीफ करता हूँ। और हम जरूर अगले थर्ड सेशन में, थर्ड सर्मन में हम इस सारे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, और हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को मुबारक कहेंगे। हालेलुया। Lord, dear family in Christ, this is the last name of our sermon, not the least because there are so many names. When we came to the theological studies, I'm going to tell you that there were hundreds of the names, hundreds and hundreds of the names about the attributes, about the qualities, about the sanctification of the Lord. But we are going to tell you the 16 of the most important names, and this is the last one, that Yehovah Qayyum, and in Hebrew you can say Al-Olam. Al-Olam means the Lord who reveals, that shows Himself
to that person whom he wants to be revealed. Hallelujah. So, and he is the everlasting Lord. Every time in each and every name, we already teach you that the Lord is the Lord of infinity. The Lord is infinite. He is the everlasting Lord, yesterday, today, and forever. Hallelujah. Praise the Lord. So our Lord is the everlasting Lord. And how we pronounce it, Al-Olam and Yehovah Qayyum. Hallelujah. Praise the family in Christ, Hosanna that Jesus Christ up. You people are the very active and the beautiful audience, active listeners as well. And thank you so much for giving your precious, precious time to learn the word of God, and that is the Rhema, the living word of God. Hallelujah. मैं आप सभी को शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सभी ने अपना बेशकीमती वक्त दिया अजीजों, और बहुत ही सब्र के साथ आपने आज के कलाम को सुना, पवित्र आत्मा की बातों के ऊपर अपने कानों को लगाया। खुदावंद आप सभी को बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।